क्या चल रहा है अभी सीबीएसई में आपका? मतलब आपने स्कूल में या कहीं और कुछ पढ़ा होगा? कुछ नहीं? बुक वगैरह कुछ नहीं देखा? हाँ, बुक भी नहीं देखा? थोड़ा पढ़े हैं? ओके। हम लोग बिहार बोर्ड पे भी आएंगे। 2 मिनट जरा बात कर लें, ठीक है? सीबीएसई में आपका दो बुक है, फ्लेमिंगो एंड विस्टास। ओके, एंड द फर्स्ट चैप्टर इन फ्लेमिंगो इज द लास्ट लेसन। ठीक है, द लास्ट लेसन। ये लास्ट लेसन इज अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। अभी आप देख रहे हो ना, 22 जनवरी को लेके पूरे इंडिया में क्या है एक्चुअली। आप अगर हिस्ट्री में जाते हैं पीछे, तो आप देखेंगे कि देयर वाज अ सॉन्ग, नेशनल सॉन्ग। व्हाट इज आवर नेशनल सॉन्ग? नेवर। दैट्स आवर नेशनल एंथम। वंदे मातरम इज आवर नेशनल सॉन्ग, एंड इट वाज रिटन बाय Bankim Chandra Chatterjee. Rabindranath Tagore had written Jana Gana Mana, national anthem. However, तो आपने देखा कि उसके पहले बहुत सारे लोग बंटे हुए थे इधर उधर। हम मराठी हैं तो हम पंजाबी हैं तो हम ये हैं हम वो हैं, और उसके बाद वंदे मातरम का एक सॉन्ग आया, नेशनल सॉन्ग। और वंदे मातरम ने क्या किया, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और गुजरात से लेके असम तक सभी को बता दिया कि वी आर इंडियंस एंड वी आर यूनाइटेड। सभी को बता दिया। लैंग्वेज कम्स फ्रॉम द कोर ऑफ आवर हार्ट। यहां से आती है हमारी भाषा जो है, वो यहां से आती है। भाषा से हम जुड़े हुए रहते हैं। अगर मान लो आपको मैंने पिक कर लिया और ले जाके आपको एक अनजान देश में अनजान जगह पे छोड़ दिया, सबसे पहले आप क्या ढूंढोगे? कोई इंसान दिखे। सबसे पहला सवाल जो हम बोलेंगे वो समझ पाता है या नहीं समझ पाता है। उसके बाद हमने उससे पूछा कि भाई तुम कहां रहते हो, तो हम इंडिया से हैं। अरे, एफिनिटी, वननेस की एक फीलिंग है ना। इंडिया में कहां से हो भाई? बिहार से। ओ बिहार। बिहार में कहां से हो? पटना से। अरे वाह। तब तो लगता है कि जैसे कितना भी वो अनजान हो, लेकिन लगता है जैसे अपना आदमी हो। ठीक है। लैंग्वेज इज अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर। हम इंग्लिश सीखते हैं, बोलते हैं, बट दैट इज अ फॉरेन लैंग्वेज, है ना। हमारी अपनी मदर टंग क्या है? हिंदी। अब अगर आपसे मैं कहूं कि यू आर नॉट सपोज टू स्पीक इन हिंदी, व्हाट विल दैट मीन? ऑफ कोर्स इन इंग्लिश बहुत ज्यादा बोली जाती है दुनिया में, बहुत सारे लोग अंग्रेजी बोलते हैं, हमारी पढ़ाई लिखाई का मीडियम अब इंग्लिश हो चुका है। तो हमें अब इंग्लिश बोलना है या लिखना है या पढ़ना है, जो भी है, लेकिन इसका क्या मतलब हुआ कि हम हिंदी बोलना छोड़ देंगे? और अगर आपको हम मना कर दें तो क्या होगा? बगावत। हाउ कैन ही स्टॉप मी फ्रॉम स्पीकिंग माई मदर टंग? होगा? कैसे हो सकता है? नाउ देयर इज अ कंट्री, फ्रांस। फ्रांस में दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अल्सिस एंड लॉरेन, एंड द स्टोरी हैज बीन रिटन फ्रॉम द व्यू ऑफ a little boy who avoids going to school. वो स्कूल नहीं जाना चाहता है, पढ़ना नहीं चाहता है। There are different reasons. A child never tries to likes to be bound in a routine. वहां पे वो रूटीन में नहीं बंधना चाहता है ना। बहाने जैसे हम लोग बनाते हैं, आज पेट दर्द कर रहा है, आज नहीं जाएंगे स्कूल।
है ना? तो ऐसे बहाने वो बनाता है और उसके बाद आज वो जबरदस्ती जा रहा है स्कूल. And his teacher had asked him to learn some rules on participles. Participles in grammar. He had not learned that. बहुत बार हम लोग भी होमवर्क नहीं करते हैं. स्कूल में अगर हैं, क्लास में अगर हैं, पिटाई खाने का डर है तो सर बनाए तो थे, कॉपी रखना भूल गए बैग में. सॉरी सर, कल पक्का ले आएंगे. बहाने होते हैं. So he was thinking of different things. He was thinking of bunking his school. Today I should not go to my class. Today I will go to the forest. जंगल में चले जाएंगे, घूमते रहेंगे दिन भर. थोड़ा सा नदी के तरफ चले जाएंगे. पक्षियों के अंडे खोजेंगे जंगल में. और थोड़े से जो प्रशियन सोल्जर्स हैं उनको हम देखेंगे हाउ दे आर ड्रिलिंग. वो ऐसा प्लान कर रहा था. लेकिन बावजूद इसके डर था मन में टीचर का, तो वो उसके कदम, he resisted his temptations and he didn't go to the forest, rather he marched towards his school. वो स्कूल तक गया. रास्ते में there was a town hall. Nowadays we have different means of communication. बहुत सारी चीजें हैं अपने पास. Those days people used to paste the notices at some common place in the market. तो ये एक टाउन हॉल था. वहां पे एक नोटिस लगा हुआ था एंड देयर वाज अ ह्यूज क्राउड इन फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल. ही स्टॉप्ड देयर, wondered what could be there on the notice board. लेकिन भीड़ में वो देखा नहीं और वहां से आगे बढ़ गया. एंड द ब्लैकस्मिथ, लोहार, वो भी वहां पे खड़ा था, गांव का लोहार. उसने कहा छोड़ दो, तुम्हारे पास स्कूल जाने के लिए अब बहुत टाइम है. उसने ताना मारा. बहुत पढ़ लिए, उसको समझ में नहीं आया. स्कूल गया. Earlier, whenever he used to reach his school, he could hear the noise inside the street only. गली में से ही स्कूल की आवाज आती थी. बच्चे शोरगुल कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं. That day, there was pin drop silence in the campus as if it had been a Sunday morning. संडे को छुट्टी होती है. अंदर गया, क्लास में पहुंचा, टीचर को देखा, डर गया. एक तो मैंने होमवर्क नहीं किया है, ऊपर से मैं लेट आया हूं क्लास में. द टीचर विल स्कोल्ड मी, डांटेंगे, वो पनिश करेंगे. देखा कि टीचर की नजर इधर उधर है तो छुप के जल्दी से घुस जाएंगे, बच्चों के बीच में बैठ जाएंगे. बट द टीचर नोटिस्ड हिम. ही डिडंट स्कॉल्ड, rather he welcomed him to the class. Come on, little friends, we were going to start without you. आ जाओ, हम लोग शुरू करने ही वाले थे, लेकिन तुम अभी तक आए नहीं थे. And the very first thing that he noticed inside the classroom was the presence of the elderly retired people at the back benches. बैक बेंच जो अक्सर खाली रहता था, वहां पे उसने देखा कि पुराने बूढ़े रिटायर्ड लोग आके बैठे हुए हैं. एंड द टीचर एम हैमल, he had put on his nicest clothes, the attire that he used to put on the days of functions, inspections. अच्छे कपड़े पहन रखे थे उसने. The frilled shirt, the coat. Then after,
The teacher started, my dear villagers at the back, and my dear children, this is going to be our last French lesson, and from tomorrow, Germans will take over the possession of our city. Order has come from Berlin to stop the teaching of French language. Only German will be taught, and your German teacher will arrive tomorrow. So, this is going to be your last French class. Children, हमें किसी भी चीज की अहमियत कब पता चलती है? जब वो चीज हमसे छीन ली जाती है, तब हमें पता चलता है कि उसकी अहमियत क्या थी या क्या हुई होगी. They were stopped from studying French. The teacher was asked to leave the school. Prussian soldiers will take over the possession of Alsace and Lorraine. Only German will be taught in the schools. What will happen? Oh, how sad it is. I'm a French man and I don't know how to write French language and speak. ये कैसे हो सकता है? मैं एक इंडियन हूं और मैं इंडिया के कल्चर के बारे में नहीं जानूं, मैं इंडिया की भाषा के बारे में नहीं जानूं, इससे बड़े शर्म की बात और क्या हो सकती है? And since they have stopped us, what will happen? We will never be able to learn French anymore. तो उसके बाद अब क्या होगा? अब तो कोई उपाय नहीं है. Political aggression of a country and cultural subjugation of a country. नेपोलियन ने कहा था, नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सुना हो? किसी भी देश को तलवार के दम पर गुलाम बनाने से बेहतर है कि उस देश की संस्कृति को खराब कर दो, लोग अपने आप तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे. नेपोलियन. Children, Franz started thinking about his past activities, why he neglected his French studies, why didn't he study hard, why he bunked his classes. अब दिख रहा है उसको. मैंने अपना क्लास बंक क्यों किया? अब तो कोई फायदा नहीं है. Then after the teacher started his class, finally the elderly people, the village postmaster, they were all sitting with the old primer book, प्राइमरी में जो हम लोगों की पहली किताब होती थी. आपने तो एबीसी नर्सरी वगैरह में पढ़ा होगा. हम लोगों को मिलती थी वो बाल मनोहर पोथी, है ना? उसमें अ आ ई से लेके क का की सब होता था. हम लोग उससे पढ़ते थे. That is the primer, the very first book. And they were sitting with their primers in their hand. कुछ लोगों ने पढ़ा, कुछ लोग इमोशन में रोने लगे, बच्चों से पूछना शुरू किया. किसी बच्चे ने एक दो जवाब दिया. फाइनली इसका टर्न आया. टीचर ने कहा कि बताओ पार्टिसिपल्स में आपने क्या सीखा? He couldn't say anything. किया ही नहीं था, होमवर्क याद किया ही नहीं था, तो क्या बोलेगा? चुपचाप खड़ा रहा. Now the teacher, he started recounting the mistakes that they had done in the past. What was that? Number one, their parents were never bothered to send them to school. They were rather interested in making money out of the labor where they could put their children to some
work. Number one. Number two, whenever this French teacher, M. Hamel, wanted to go on a leave, wanted to have some picnic or celebrations whatsoever, he declared holidays in the school. Number three, the students themselves neglected their studies and they were not able to speak or learn or write French language. Okay, ये तीन गलती. Finally, the teacher started reading out his lesson. And what was that? Children, hold fast unto your language, because it is the key to your prison. On the roof, at the same moment, some pigeons were cooing, kabutar. Franz thought, will they ever make the pigeons sing in German? Even the pigeons? इतने ताकतवर हो तुम, हमसे तो हमें तो गुलाम बना लिया, तो हमारी भाषा तुमने छीन ली. क्या कबूतरों की भी भाषा छीन लोगे? क्या उनको भी बोल दोगे कि जर्मन में बात करो? Such is the importance of language. And the last lesson given by M. Hamel, the French teacher, please hold fast unto your language, because it will be your key to imprisonment. जब तक अपनी भाषा से आप जुड़े हुए हो, तब तक आपके पास गुलामी से आजाद होने की चाबी है. इसलिए कभी भी अपनी भाषा को मत भूलो, अपनी भाषा को मत छोड़ो. Now Franz realized why there was a silence in the classroom, why there was such a big crowd in front of the town hall. What was the message? What was the notice there on the notice board? And why these elderly people have come to sit at the back of the class? It was as if they had gathered to pay their final tribute to the language and the country that was theirs no more. Now they were going to be the Prussians. That's the end of the story. ये कहानी है आपकी, लास्ट लेसन. और अभी 14th फरवरी से आपका एग्जाम शुरू होने वाला है. आई थिंक 22nd इज द डे, 22nd February is the day for English core. You have taken English core? Anyone elective? English elective? पता है आपने लिया कौन सा इंग्लिश है, इंग्लिश कोर या इंग्लिश इलेक्टिव? इंग्लिश कोर. द कोड इज 301. ठीक है, तो ये आपका पहला चैप्टर है. लास्ट लेसन गिवन बाय द टीचर. ओके, तो आप इसको पढ़ेंगे. मैं अभी आऊंगा आपके पास लगातार. ठीक है, आप इसको पढ़ेंगे घर पे, और एक एक चैप्टर पढ़ के आप जल्दी जल्दी आएंगे. एक एक दिन में आपका एक एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, गो ऑन सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑल्सो. सैंपल पेपर है आपके पास, तो फिर आप एग्जाम कैसे दोगे? आर यू गोइंग टू अपीयर? 11th में हो सब लोग, तो 11th में तो दूसरी किताब है, दैट इज हॉर्नबिल एंड स्नैपशॉट. हॉर्नबिल एंड स्नैपशॉट. आपने 12th कहा, चलिए कोई बात नहीं. देन हॉर्नबिल, द फर्स्ट चैप्टर, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय खुशवंत सिंह, है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है. किताब खोलने की जरूरत नहीं है, किताब खोलने की जरूरत नहीं है. चलिए, तो अभी हम लोग थोड़ा सा बात कर लें. आपके लिए पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी आप पढ़ के आएंगे. द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय खुशवंत सिंह.
There was a very famous poem by Nissim Ezekiel. निसिम इजेकियल एक पोएट हैं, उन्होंने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। ठीक है। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन में ऐसा है कि उसकी मां जाती है बरसात के दिन में गांव के घर में, और एक बिच्छू उसको काट लेता है। और बिच्छू काट लेता है तो पूरी रात वो, गांव का माहौल है, डॉक्टर, हॉस्पिटल, ये सब नहीं। और गांव में लोग ज्यादा करके तंत्र मंत्र में विश्वास करते हैं, झाड़ फूंक में। तो वैसा ही चल रहा है, और वो पूरी रात बिच्छू के दर्द से, डंक के दर्द से वो छटपटा रही है। फाइनली आफ्टर 20 आवर्स इट लॉस्ट इट्स स्टिंग। 20 घंटे के बाद, ठीक है, एंड माई मदर केम बैक टू हर सेंसेस एंड शी सेड, थैंक गॉड, गौर करना, thank God the scorpion picked on me and spared my children. What does it mean? Even at the verge of death, the mother is bothered about the safety of her children. मां मर जाए, लेकिन उसकी पहली अहमियत क्या होती है? बच्चों की सुरक्षा। Okay? The same thing has been portrayed. That is the rural Indian motherhood. Rural Indian motherhood. The very same thing has been explained by Khushwant Singh in The Portrait of a Lady. His grandfather had died. His father was in a job, and his parents had been out into the city. Khushwant Singh was left with his grandmother in the village, and the grandmother, as it is accustomed, as it is a tradition, the grandmother used to wake him up in the morning, get him ready for the school, and in the meantime, she would sing her morning prayers in a monotonous tone. Why she did so? Huh? In a hope that Khushwant Singh will listen to those songs and learn that. परंपरा, संस्कार, जो चीजें हैं वो बाजार में नहीं मिलती, किताबों में नहीं मिलती, वो बच्चे परिवार के बुजुर्गों को देखकर सीखते हैं, है ना? बच्चे सीखते हैं परिवार में बुजुर्गों को देखकर। एक छोटा सा उदाहरण, अगर मेरे बेटे ने मुझे कभी अपने दादा का पैर दबाते हुए नहीं देखा, तो वो कभी नहीं दबाएगा, वो कभी मेरा पैर नहीं दबाएगा। वो सिखाने की चीज नहीं है, दैट कैन नॉट बी फोर्स्ड। अगर हमारे घर में एक नियम है कि हमारे घर में सभी लोग, बड़े बुजुर्ग, मम्मी पापा, सब लोग सुबह उठकर नहाने धोने के बाद पूजा करते हैं, उसके बाद ही कुछ खाते हैं, तो देख देख कर बच्चा भी सीख जाएगा। एक दो बार उसको बताना पड़ता है, उसके बाद धीरे 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 उसकी भी आदत हो जाती है। इसको कहते हैं संस्कार, सैक्रामेंट्स। तो द ग्रैंडमदर होप्ड that the grandson, Khushwant Singh, will learn the same songs, religious songs. Those were religious songs. गांव घर में आज भी, अब तो म्यूजिक का सिस्टम है, म्यूजिक का जमाना है, मोबाइल का है, लेकिन गांव में आज भी आप देखेंगे पुरानी महिलाएं जो हैं सुबह में सबसे पहले जगकर, और वो भगवान, अपना जैसी भी उनकी आवाज हो, भगवान के भजन गाना शुरू कर देती हैं। उनको नहीं पता कि कोई उनकी आवाज कैसी भद्दी लग रही है या कर्कश आवाज है या जो भी है, they start singing. She did that. Then after, she bathed him, get him ready for the school, and she carried the stale chapatis with her. 1 or 2 stale chapatis she would give to Khushwant Singh as the breakfast. Stale chapatis, बासी रोटी हम लोग खाते हैं। अगर घर में किसी ने कहा कि बासी रोटी है, रात की बची हुई, खा लो, कौन खाएगा? लेकिन बड़े शौक से 5 दिन का बासी पिज्जा और बर्गर खाने हम मार्केट में जाते हैं। However, that's different. So she used to carry some stale chapatis with her while going to the school.
The school was beside a temple. The priest would teach the children alphabet, and in the meantime, the grandmother would sit in the temple and she would read the scriptures there. वहां पे वो बैठकर धार्मिक पुस्तकें पढ़ती रहती थी और बच्चे पुजारी के साथ स्कूल में पढ़ते थे. उसके बाद they used to come back to home. While back to home, they were chased by dogs, followed by dogs, street dogs. And the grandmother would feed the stale chapatis to the dogs. ये भी एक आदत है. आज भी हमारे घर में परंपरा है, पहली रोटी गाय को, अंतिम रोटी कुत्ते को. This is a tradition. Finally, when his parents were comfortably settled in the city, they sent for Khushwant Singh and his grandmother. Sent for is a phrasal verb. ठीक है, और इसका मतलब होता है बुलाना. उन्होंने उनको बुला लिया शहर में. In the city, Khushwant Singh used to go to an English medium school in a motor bus. So the grandmother didn't have to take him to the school and bring him back. Number two, whenever he came back from the school, the grandmother would ask, "What did you learn?" And Khushwant Singh would tell her that he learned some lessons in music, some English words, some science, etc. The grandmother was unable to understand those things. She didn't know about those things. So she secluded herself. But the day when she learned that her grandson was being given lessons in music, that was a very awkward day for her. She became upset. Why? Because to her, music had lewd associations and it was the monopoly of beggars and harlots. आज भी, अब तो कॉमन हो गया है, आज भी अगर गांव घर में बारात निकले और लड़के अगर डांस करते हैं तो लोग शिकायत करते हैं. अब तो मतलब सभी जगह पे हो गया है ये फैशन, लेकिन लोग शिकायत करते हैं, नहीं नहीं नहीं, लड़कों को ये नहीं करना. However, so she became very upset. In the city, there were no street dogs. So what she used to take as a habit, she devoted herself to spinning wheel, charkha, and feeding sparrows in the courtyard of the city. This way, days passed. Now he went to a college and he was given a separate room. So finally, the bond of friendship which he had with his grandmother from his early childhood days, that was snapped, that was broken, that was cut. Now, after some more years, he was going abroad. In the meantime, I forgot to tell you that his grandmother was a very religious lady. She always used to count the beads of her rosary, whispering the prayers. Okay? And then after he was going abroad, he thought that the grandmother would become sentimental. She would show some emotions. But that was not so. Grandmother was there at the railway station to see him off. And simply she kissed his forehead. The grandmother was very old. Khushwant Singh thought that this was the last physical contact in between him and his grandmother. He went abroad. After 5 years, he returned.
And he was happy to see that his grandmother was the very same, and he was there at the railway station to receive him also. This time also, she didn't show any emotion. She simply embraced him. Her lips were constantly moving in inaudible prayer, her fingers telling the beads of her rosary, and finally they returned to their home. Now, the grandmother, in the evening, you remember, from the very beginning, she hated music. She didn't like music, but today there was a change in her routine. She stopped her prayers, got an old, dilapidated, phata hua dhol, dilapidated drum, collected the women from the neighborhood, and started singing. That was the change in her behavior. Started singing of the homecoming of warriors. योद्धा जब युद्ध जीत के घर आते हैं, उस समय जो महिलाएं उनके शौर्य का गुणगान करते हुए गीत गाती हैं, उस तरह के गीत उसने गाने शुरू कर दिए. And for several hours she thamped the sagging skin of the old dilapidated drum, and the family members had to stop her. Ruk jao, because the overstraining will harm your health. She didn't stop. The next morning, she was taken ill. She fell ill. They called the doctor. The doctor said it was a mild fever and it will go. But the grandmother had a very different thought. She said, no, I won't waste my time in talking to anyone. Let me say my prayers, because just before the few hours of the last chapter of my life, I had stopped praying. So I won't stop. I won't give any time to anyone. I won't waste my time. They objected to it. No, 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 it cannot be so. Yes, she never listened to anyone. And after some hours, the rosary fell off her lifeless fingers and she died. They went to bring the crude stretcher, make the arrangements, covered the body, the corpse, dead body, with a shroud, red shroud, and they went to make some other arrangements. When they came in the evening, they were surprised to see that thousands of sparrows were sitting around her body in the courtyard, and they were not chirping. They were not making any sound. The mother, Khushwant Singh's mother, thought that the grandmother used to feed them every day with the bits of chapatis. So she went inside the kitchen, brought a bread, and broke into small crumbs and threw it to the sparrows. But the sparrows took no notice of the bread. When they took out the body, they silently flew away. And the next morning, the sweeper had to throw those breadcrumbs into the dustbin. That's the story of the grandmother. Now, portrait, what is a portrait? Portrait क्या होता है? Is a picture. But here, it's not a picture. It's a character sketch. A character sketch. Okay? So you will read this portrait of a lady, and tomorrow we will have a discussion, more discussions over it. ठीक है? Now we come to Bihar board. बिहार बोर्ड में कौन कौन है? प्लीज रेज योर हैंड्स. आप लोग 12th में हो या 11th में? 11th में हो, ठीक है. आपका जो पेपर आता है 100 मार्क्स का इंग्लिश होता है, ठीक है. देयर आर 2 बुक्स, रेनबो एंड द स्टोरी ऑफ इंग्लिश, है ना.
तो अभी हम लोग थोड़ा सा उसको देखेंगे, है ना? लेकिन उसके पहले आज मैं आपको छोटा सा ग्रामर बताऊंगा, ठीक है? ग्रामर में आपने क्या क्या पढ़ा है? वॉइस पढ़ा है? वॉइस एवरीवन, सभी लोग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बना लेते हो? सभी लोग बन जाता है, सारे सेंटेंसेस बन जाते हैं। वेल, आई एम गिविंग यू अ सेंटेंस हियर। ओह, मुझे तो लिखना भी नहीं आता इससे। I go to market, change into passive. I go to market. We have a subject here, we have a verb also, and we have an object also. How will we change it into passive? Any idea? Market is gone by me. है ना? Market is gone by me. Is the sentence correct? The sentence is structurally correct, but grammatically or in context of meaning, it is wrong. Okay? Second sentence. What is your name? Change it into passive. Yes? Any idea? What is your name? We have a subject, we have an object, we have a verb also. Yes? No idea. एक बार फिर से हम लोग वॉइस करेंगे. I think you are well acquainted with the definition and all. What is voice? How will you define voice? वॉइस को कैसे डिफाइन करेंगे? कॉपी होगी आप लोगों के पास? हाँ, तो लिखें. Voice is a form of verb which tells us whatever is denoted by the subject does something or has something done to it. Voice is a form of verb which tells us whatever is denoted by the subject does something or had something done to it.
ओवर। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे हम लोग, ठीक है। Voice is a form of verb which tells us whatever is denoted by the subject does something or had something done to it. सब्जेक्ट या तो कुछ करता है या सब्जेक्ट को कुछ होता है, ठीक है। आपको पता ही है, two kinds of voice, active and passive. When the subject performs the action denoted by the verb, it is active. And when the subject receives the result of the action denoted by the verb, it is passive. Very simple. Examples also, the cat killed the mouse was killed by the cat. But the basic thing to be noted here is the difference between active and passive voice. The cat killed the mouse and the mouse was killed by the cat. है ना? सर दोनों में तो चूहा ही मर रहा है और मारा बिल्ली नहीं है, तो why do we need these two kinds of structures? And how can we differentiate it? उसमें अंतर कैसे करेंगे? ठीक है? In an active sentence, दोनों में अंतर क्या है सर? In an active sentence, this is an active sentence. In an active sentence, the rising stress is upon the subject. The cat killed the mouse, and the falling stress is upon the object. Passive, the mouse was killed by the same thing. The falling stress will be upon the object. Rising stress, ठीक है? The mouse was killed by the cat. इतना पता है? अब हम आते हैं इस पे, आपका स्ट्रक्चर्स, पैसिव स्ट्रक्चर्स पता है सबको? सबको पता है पैसिव स्ट्रक्चर्स? शर्माइए मत, डोंट हेजिटेट। गलती यहां कर लो, पूछ लो, यहां एग्जाम में परफेक्ट होके जाओ। हम लोग लिख लें पैसिव स्ट्रक्चर्स। Passive structures. Number one, simple present. Subject plus is, am, are plus V3. Number two, present continuous. Subject plus is, am, are plus being plus V3. Number three, present perfect. Subject plus has, have, been plus V3. Number four is simple past. Subject plus was, were plus V3. Number five, past continuous. Subject plus was, were plus being
plus V3. Number 6, past perfect. Subject plus had plus been plus V3. Write down. Over. Okay. Number 7, simple future. Subject plus shall, will plus be plus V3. Number 8, future perfect. Subject plus shall, will plus have plus been plus V3. Number 9, can, may, etc. Subject plus can, may plus be plus V3. Over. Now there is a question. We have how many kinds of tenses are there? Tense कितने हैं? उनके kinds मिला के 12, है ना? 12. लेकिन सर यहाँ पे आपने 8 का ही लिखा है, 9वां तो मॉडल्स है. बाकी 4 कहां गए? हाँ, बाकी 4 कहां गए? क्यों नहीं बनता? क्यों नहीं बनता? सीबीएसई. कौन है सीबीएसई वाले? ठीक है, आपने ग्रामर पढ़ा है? पढ़ा है? तो ये बताइए कि इनका पैसिव क्यों नहीं बनता? बाकी 4 का पैसिव क्यों नहीं बनता? हाँ, दोनों सेम नहीं होता है. वी हैव, ये कर लिया आपने, सबने नोट कर लिया. मॉडल्स एंड ऑक्सिलरीज का नाम सुने होंगे. ऑक्सिलरी क्या होता है? ऑक्सिलरीज आर द हेल्पिंग वर्ब्स, है ना? और बेसिक ऑक्सिलरी क्या है अपना? बी. B is the basic auxiliary, and this auxiliary cannot be used twice in a sentence. एक सेंटेंस में बेसिक ऑक्सिलियरी बी को हम 2 बार यूज नहीं कर सकते, इसलिए इन 4 टेंसेस का पैसिव नहीं बनता है. क्लियर? अब इसके बाद ये स्ट्रक्चर्स आपने लिख लिए, तो आपसे वो दोनों सेंटेंस क्यों नहीं बना, इसके ऊपर बात करेंगे. क्या कर दे? क्या कर दे इसको? अच्छा, ये हो गया. ऐड करने से क्या होगा? अब हो गया ना.
हमें इसकी जानकारी नहीं है बेटा। ठीक है। हाँ, तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। और आपको ये भी पता है कि subject is made the object and the object is made the subject. Depending upon its tense, the verb is split into two parts, an auxiliary and third form of the main verb. You must have noticed that all the verb forms in the structures are V3, past participle form of the verb. है ना? ये आपने देखा होगा। तो अब देखते हैं आप कि हम और आप एक प्रीपोजिशन बाई लगाते हो। ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, देयर आर 4 डिफरेंट रूल्स। ओके, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या है ये? ओनली अ ट्रांजिटिव वर्ब कैन बी चेंज्ड into its passive form. Only a transitive verb can be changed into its passive form. Okay? How many kinds of verbs are there? Transitive and intransitive. हिंदी में जैसे पढ़ते हैं सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। वो क्रिया जिसको अपना मतलब पूरा करने के लिए कर्म के ऊपर आधारित होना पड़ता है, ऑब्जेक्ट के ऊपर आधारित होना पड़ता है, वो है सकर्मक क्रिया। और वो क्रिया जो कि बिना ऑब्जेक्ट के, बिना कर्म के अपना मतलब पूरा कर ले, उसको कहते हैं अकर्मक क्रिया। वेरी सिंपल। सो सकर्मक क्रिया इज ट्रांजिटिव वर्ब एंड अकर्मक क्रिया इज intransitive verb. वेरी क्लियर? अब हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। एंड देयर इज नो लाइन ऑफ सेग्रीगेशन। डिवाइडिंग लाइन नहीं है कि इतना वर्ब ट्रांजिटिव है और इतना वर्ब इंट्रांजिटिव है। दैट डिपेंड्स अपॉन द यूज। सपोज वी राइट बर्ड्स फ्लाई। कैन वी कॉल इट अ सेंटेंस? Birds fly. Is it a sentence? Yes, it is meaningful. पक्षी उड़ते हैं, है ना? अब हम कुछ नहीं करेंगे, सेम वर्ब को दूसरे तरीके से यूज करते हैं। चिल्ड्रन फ्लाई। हाँ? इज इट मीनिंगफुल? और नहीं उड़ते हो आप? वो खेलते नहीं हो? कौआ उड़, बउआ उड़, उड़ते नहीं हो? That means we will require an object to complete this sentence. और अगर इसमें हम एक ऑब्जेक्ट लगा दें, चिल्ड्रन फ्लाई काइट्स, बच्चे पतंग उड़ाते हैं, ठीक है? सो द सेम वर्ब कैन बी यूज्ड बोथ ट्रांजिटिवली एंड intransitively. Same verb can be used. Okay? So the first rule says only a transitive verb can be changed into its passive form. Rule number 2. A vague subject in an active sentence is not retained as an object in the passive.
vague, vague, that is unclear, that is not certain. Someone has taken my pen. Who is that someone? कौन है यहां पे? है ना? लेकिन लिया तो है किसी ने, है ना? वो क्या है? वेग सब्जेक्ट है. Someone had switched off the lights. वेग सब्जेक्ट. तो वैसे वेग सब्जेक्ट जो कि बिल्कुल स्पष्ट नहीं होते हैं, वैसे सब्जेक्ट को जब सेंटेंस को हम पैसिव में चेंज करते हैं, तो वैसे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं. अजेंट विथ बाई वो नहीं लगाते हैं. लाइक द एग्जाम्पल, समवन हैज पेंटेड द वॉल. है ना? किसी ने दीवार के ऊपर कलर कर दिया है. द वॉल हैज बीन पेंटेड बाय समवन. गलत हो जाएगा. बाय समवन गलत होगा. सेंटेंस यहीं पे आपका पूरा है. द वॉल हैज बीन पेंटेड. इफ इट इज अ वेग सब्जेक्ट, अगर वो वेग सब्जेक्ट है तो वो कभी भी ऑब्जेक्ट बन के नहीं आएगा. रूल नंबर 3. Rule 3. If there are two or more than two objects in an active sentence, while changing it into passive, we can use either of them as the subject, but it is always imperative to use the indirect object as the subject in the passive. ये रूल नंबर 3 है आपका. If there are two or more than two objects in an active sentence, okay, ठीक है. 5 मिनट और. हमें पता है आप घड़ी देख रहे हो. इसको कंप्लीट तो कर लें. ठीक है. अब ये दो सब्जेक्ट अगर हो गया एक सेंटेंस में, तो फिर हम क्या करेंगे? सबने लिख लिया है ना? अगर एक सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हो गया तो फिर हम क्या करेंगे? बताओ.
हाँ, ओह, लो। अच्छा, पेन। अच्छा। My father gave me a watch. My father gave me a watch. क्या है ये? We have two different objects. एक ऑब्जेक्ट है वॉच और दूसरा है मी। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। द ऑब्जेक्ट which suffers the action denoted by the verb. The object which suffers the action denoted by the verb is direct object, है ना? इसे हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। And the object that receives the result of the action denoted by the verb is indirect object. ये दिया गया, किसको दिया गया, किसको मिला? मी। तो ये भी हो जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। रूल कहता है ग्रामर के अकॉर्डिंगली दो ऑब्जेक्ट है तो हम किसी को सब्जेक्ट बना लेंगे, है ना? रूल कहता है कि वो गलत होगा, क्योंकि आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही बनाना होगा। लाइक अगर हम इसको चेंज करते हैं, अ वॉच वॉज गिवन टू मी, अ वॉच वॉज गिवन टू मी बाय माय फादर। ठीक है, अगर हम ये लिखते हैं स्ट्रक्चरली ये सही है, लेकिन ग्रामर इसको कहता है कि ये गलत है। इसमें हमको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लाना होगा। आई वॉज गिवन अ वॉच बाय माय फादर। तो ग्रामर इसको बोलेगा कि ये सही है। गॉट इट? ये आ गया समझ में? यू कैन नोट इट डाउन। ठीक है, अब इसको हम लोग लास्ट रूल पे आते हैं, रूल नंबर 4। कैन यू टेल मी व्हाट इज अ क्लॉज? क्लॉज, क्लॉज क्या होता है? यस, फ्रेज एंड क्लॉज। क्लॉज आप लोग बोलो बेटा। हम्म, क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ अ लार्जर सेंटेंस। एक सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अ सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है, तो सब्जेक्ट इज दैट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस अबाउट विच वी से समथिंग, जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं। एंड वॉट एवर इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज नोन एज द प्रेडिकेट। वेरी क्लियर? तो अगर एक सेंटेंस है, अभी तो हम लोगों ने छोटा छोटा सेंटेंस देखा, है ना? बड़े बड़े सेंटेंसेस भी होते हैं। क्या होता है उसमें? बड़े, दो से ज्यादा, एक से ज्यादा, जितने भी क्लॉज लगा लो, है ना? तो हम लोग एक सेंटेंस लेते हैं, पहले रूल लिखेंगे। इफ देयर आर टू और more than two clauses
in an active sentence while changing it into passive, we need to change every clause into its passive form. अगर एक बड़ा सेंटेंस है अपने पास जिसमें एक से ज्यादा क्लॉज हैं, वैसे सेंटेंस को जब पैसिव में चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे, उसके हर क्लॉज को पैसिव में चेंज करेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। The legend tells us how the castle received its name. ठीक है, इसको अगर पैसिव में बनाने के लिए बोला जाए तो हम लोग कहां पे कंफ्यूज कर जाएंगे, द लीजेंड और यहां पे इट्स नेम, है ना। लेकिन हम देखेंगे तो इसमें दो क्लॉज है, देयर आर टू क्लॉजेस। एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, एक और होता है कोऑर्डिनेट। ठीक है, चलिए, प्रिंसिपल क्लॉज एंड मेन क्लॉज एक ही होते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज इज द डिपेंडेंट क्लॉज दैट डिपेंड्स अपॉन द मेन क्लॉज फॉर इट्स मीनिंग। Okay, now we have to change this into passive. What will we do? First of all, we will identify the different clauses. The legend tells us subject, verb, object. How is an adverb of manner that has been used to join the two clauses, and then after the castle is the subject, verb, object. Okay, अब इसको पहले चेंज करेंगे। वी आर टोल्ड by the legend how its name was received by the castle. Okay, is that clear? Huh? That's the end of your class. So this is about voice. Okay, tomorrow also. Tomorrow is Sunday. You have your class Monday. Okay, day after tomorrow, Monday. CBSE students will be back with the portrait of a lady. Any question, any queries? Bihar board, voice. And you too, voice and portrait of a lady. Bharat is my home is the first chapter. Bihar board. Rainbow. Yes. And the story of my English. Okay. That's the end of your class. Thank you. इसमें चिपक जाएगा यहां। अच्छा, सर बताएंगे।